Hey, it's me, Daksh. Thank you so much for supporting the channel up till now. And if you're a new viewer, welcome to the channel. Before you watch the rest of the video, I'd just like to quickly say, please like the video. It really helps me out. And if you haven't, if you're a new viewer, please subscribe. It really helps me out. Thank you so much. Enjoy the video. प्लीज यार कुछ कोई ना कोई जिनचेंको मार्टिनेली कम ऑन जॉर्जिनियो Agent Jorginho! Agent Jorginho! Let's go! Agent Jorginho, bhai! Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Dakshin. Welcome to another stream. Stream nahi recording hai bhai. Welcome to another video on this channel. And अगर आपने वो previous clip देखा जो मैंने इससे पहले डाला है, you'd see how happy I am. इस गेम ने मुझे सारे इमोशंस फील करवाए फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट सैडनेस हार्ट ब्रेक टू हैप्पीनेस इलेशन एंड जस्ट सेलिब्रेशन या मतलब व्हाट अ गेम द परफेक्ट प्रीमियर लीग गेम जिसको कहते हैं एंड इस गेम के फर्स्ट हाफ में मैं काफ़ी हार्ट ब्रोकन था जैसे मैंने कहा बिकॉज इट फेल्ट लाइक आर्सेनल ने कुछ नहीं सीखा 4 गेम्स इन अ रो हम हारने वाले थे एक पॉइंट लेने वाले थे वॉट एवर इट इज इट फेल लाइक अ लॉस एनीवे लग रहा था कि आर्सेनल ने कुछ प्रोग्रेस किया नहीं है मिकेल आर्टेटा रिजिड है साका को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं हम कुछ नहीं सीखे हैं ये फिर से बॉटलर्स मेंटालिटी आ गई है क्लब में हम नर्वस हैं हम ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं इशू बट इस गेम ने मुझे एक और चीज़ सिखाई दिस गेम शोड मी दैट आर्सेनल आर डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर डिड यू नो that last season, Arsenal, when they were in a losing position, the record was 1 win, 1 draw, and 13 losses. फिर से सुनिए जब Arsenal were in a losing position, we had 1 win, 1 draw, and 13 losses. इस सीजन अगर हम इसी रिकॉर्ड की बात करें it is 4 wins, 0 draws, and 3 losses. Now, it's not an ideal record. It's just above 50%. But 1-1-13 say 4-0-3 sounds so much better. And it's really a testament to the mentality of the manager, some of the senior players at the club. मैंने लास्ट गेम में सिटी वाले गेम में बोला था in my post game stream that the senior players have let us down. And it's true. But इस गेम में थोड़ी सी रस्टी थी लेट्स से जाका एंड जिनचेंको थोड़े से रस्टी थे कुछ प्लेयर्स कभी कभी लग रहा था बहुत आसानी से हम गिव अप कर रहे हैं पोजीशन क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम में जब विला ने स्कोर किया था थ्रू वॉटकिंस एंड कुटिन्यो सेम चीज हो रही थी हमारे पास बॉल बहुत थी वी हेल्ड द बॉल in our defense in the midfield and up to their box and jab when it came to making that final pass we messed it up and Villa four passes mein literally 4-5 passes mein they were in behind us and staring at a goal and ऐसा नहीं है कि विला के पास चांसेस नहीं थे apart from the 2 goals they scored from they hit the post from a Leon Bailey shot they tested the keeper from Douglas Luiz they tested the keeper from Duran तो ऐसा नहीं था कि विला के पास बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी हमने बहुत ही कंट्रोल किया था बट हमने इस गेम में बहुत सॉलिड मेंटालिटी दिखाई एंड येस मे बी इट वाजंट द परफेक्ट परफॉर्मेंस बट इट इज़ दीज काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंसेस विच मेक और ब्रेक अ सीजन मैंने स्ट्रीम पे बोला था दैट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द टाइटल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वट एवर आई जस्ट वॉन्ट अस टू प्ले ब्यूटिफुल फुटबॉल बिकॉज दैट इज़ वॉट मेड मी फॉल इन लव विद आर्सेनल फर्स्ट हाफ में कोई ब्यूटीफुल फुटबॉल का नामो निशान नहीं था आई थिंक जब जिनचेंको ने अपना सेकंड गोल मारा इज व्हेन Odegaard started coming to life is when the substitute started coming on Martinelli आया Fabio Vieira आया थोड़ा सा लगा कि कुछ spark शायद से है and up till the 90th minute when I was losing hope I was like ठीक है fine draw हो गया I was rationalizing it to myself कि चलो एक point तो हम आगे बढ़े we're not stagnant on that position anymore although that was more of a consolation than anything Jorginho pulled out a massive shot एक शॉट जो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया चेल्सी में उसने इतने सालों से नहीं मारा 4 साल से चेल्सी में एक शॉट ऐसा नहीं मारा सिर्फ साइडवेज पासिंग करता था द आइडिया टू टेक दैट शॉट अ लिटिल बिट ऑफ लक इन्वॉल्व कि वो पोस्ट से लग के क्रॉस बार से लग के मार्टिनेज से बाउंस होके गोल में चली गई एब्सोल्युटली इनसेन
And then just to add a little cherry on top to the entire game, कॉर्नर हुआ विला के लिए लास्ट मिनट में, एंड वियरा ने मार्टिनेली को पुट थ्रू किया एंड मार्टिनेली ने एक ओपन गोल में स्लॉट कर दी बॉल. इट फेल्ट लाइक जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी, जितना भी डिसअपॉइंटमेंट था अबाउट बीइंग रिटन ऑफ, इतने टाइम से जो बैंटर झेलना पड़ रहा था कि बॉटल कर दिया, आर्सेनल ने बॉटल कर दिया. एंड डिस्पाइट मी नॉट गिविंग अ क्रैप अबाउट व्हाट एनीवन एल्स से, वेदर इट्स अ फैन, वेदर इट्स अ क्रिएटर, व्हाटएवर इट इज, लग रहा था दैट दिस इज विंडिकेशन, कि आओ, you might have written us off, but we refuse to leave. We refuse to leave. And yes, it's just one game, and it's not the prettiest game we've played, but I don't care. चाहे हम कितना भी अगली खेले, as long as, मैंने क्या बोला है, as long as we match City's tally and we are a little better than them, maybe we can think about the title. But right now, it doesn't really matter. We won against Villa. Now we have to win against Leicester. और उसके आगे कौन सी गेम है मुझे पता भी नहीं करना. So we have to do one game at a time, and we have to replicate this mentality. Before I close this game, all I'll say is this: जब सिटी के साथ डिफीट हुई थी, साइकोलॉजिकली सबको लग रहा था एक बहुत डैमेजिंग डिफीट है ये, कि प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस डाउन है, ये सब डाउन है एंड एवरीथिंग. एंड जब हमने 5th मिनट में गोल स्कोर करा, मुझे लगा हाँ, दैट इज ट्रू. बट सिमिलर वेन में, getting a win like this, from being down twice, making a double comeback, and then finally winning the game, ऐसी wins इतना confidence and belief देती है. I think this was just the win we needed. This was just the belief we needed. And maybe next time, say, we will see a better Arsenal as well. Maybe we can play beautiful football with a lot more control, but I don't care as long as we win. So a great win. काफी confidence देने वाली win थी. And I'm really happy that Jorginho, Zinchenko, Saka, and Martinelli were on the score sheet. Huge props to the subs. चाहे स्ट्रॉसार्ड ने जब स्टार्ट किया तो अच्छी बात है, चाहे मार्टिनेली ने सब पे आके जो इम्पैक्ट किया, बहुत बढ़िया बात है. आई एम प्राउड ऑफ everyone in the team who made a contribution. And yeah, man, let's just move on to next week. Let's just continue this. That's all we need to do. Week on week, एक गेम जीतो, and that's pretty much it. अब हम बात करते हैं the second game which I really watched, which was Liverpool versus Newcastle. Now, स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा नर्वी लग रहा था लिवरपूल के लिए, बट एलिसन पुल्ड ऑफ सम अमेजिंग सेव्स. मैं इस गेम को पूरा नहीं देख पाया, आई ओनली वॉच्ड आई थिंक हाफ टाइम. बट फाइनल रिजल्ट अगर 2-0 था, तो मैंने सारे मेजर इंसिडेंट्स इस गेम के देख लिए थे. सबसे पहला गोल मारा था डार्विन न्यूनेज ने, ब्यूटीफुल टेक ऑन, एंड फ्रॉम अ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड लॉन्ग बॉल. एंड ऑफ कोर्स आप कितनी बार देखते हो कि ट्रेंट एक लंबी बॉल छेड़ता है and striker runs on to it, scores. Trent, who's been under a lot of criticism, played really well. And Darwin Núñez, सब लोगों को लगता है फ्लॉप है, मुझे तो लगता है he's gonna be a big striker in the future. Great game from him. Second goal साला ने मारा, सॉरी कोडी गैक्पो ने मारा फ्रॉम अ साला असिस्ट. साला ने ब्यूटीफुल क्रॉस फील्ड तो नहीं था, एक सॉर्ट ऑफ अच्छा सा चिप्ड पास दिया था कोडी गैक्पो पर. कोडी गैक्पो ने भी अच्छे से संभाला था. एंड टू मेक मैटर्स वर्स फॉर न्यूकासल, who have been struggling to get wins and struggling to score goals and look a little lost without Bruno Guimaraes. I think Nick Pope की suspension is a huge thing, and not only for this game, because it made their comeback a little harder. In fact, almost impossible, I would say, because they had to play with 10 men. जब Nick Pope ने ball handle करी outside his box in order to get to a ball without before Salah, and that was a very weird decision to make anyway. He is also now out of the EFL Cup final, and looks like Manchester United का रास्ता साफ है. But another Liverpool man in the form of Loris Karius is in the way of Manchester United. So Loris Karius will be playing the EFL Cup final. It's a little disappointing, but it shows Newcastle Bruno Guimaraes पे कितनी dependent है, and Liverpool का resurgence शायद it's on. They have to win a few games. अभी 2 गेम हुई हैं, 3-4 गेम और जीत लेंगे. They can think of themselves. जो टॉप 4 एक पॉइंट पे इम्पॉसिबल लग रहा था, जो लग रहा था कि आपको अपने एक्सपेक्टेशन सिर्फ यूरोप तक ही रखने हैं, that Liverpool might be coming back. It's still a little ways off. देखते हैं, अभी थोड़ी सी और डिफिकल्ट गेम्स हैं, बट लिवरपूल विल बी वेरी हैप्पी विद दिस विन. अब एक गेम पे आते हैं जहां पे काफी लोगों का काफी विसरल रिएक्शन रहा है. दैट इज चेल्सी वर्सेस साउथहैम्पटन. नाउ, in all my predictions on Ankit Bhai's channel, on Nidhi and Manas's Menace and the Monk channel,
I said this is the best game for Chelsea to play because Chelsea should have this handled. They have great quality on paper. They have excellent players. And I know chemistry might be an issue, but they should handle a Southampton without a manager who looks a lot in disarray. But what a surprising 1-0 result. And who else to score except James Ward-Prowse? ग्राहम पॉटर के लिए मुझे बुरा लग रहा है एंड मैंने सारे कॉल्स देखे हैं. इट्स अ लिटिल इनडिफेंसिबल लूजिंग टू साउथहैम्पटन. ग्राहम पॉटर ने खुद ही एडमिट किया है. इफ यू सी हिज इंटरव्यू ही हैज सेड दैट with all due respect to Southampton, if you lose 1-0 against him, it's not acceptable. And he understands that. He's under a lot of pressure. And a lot of times Chelsea fans will be like, fire karo. This is it. Um, and I think that comes from a point of how Chelsea has been as a club successful रहा है, Champions League जीता है, leagues जीता है, whatever. But आपके पास अब सेम ओनर नहीं है. एंड आपके नए ओनर ने नए टाइप ऑफ प्लेयर्स खरीदे हैं. यू हैव नॉट बॉट योर बैरनस्लाव इवानोविचेस एंड योर बैलैक्स एंड योर रॉबिन्स एंड योर ड्रॉगबाज. देखो, आपने जो प्लेयर्स खरीदे हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए ही हैं. लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को आप इतना वैल्यू क्यों करते हो? मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा. बट व्हाई इज एंजो वर्थ सो मच एंड अ मेडवेक इज वर्थ सो मच एंड अ मुद्रिक इज वर्थ सो मच? Because you're gambling on the potential of these players to be top 3, top 5 players in the world. अगर आप आर्सेनल की तरह ट्रॉसार्ड लेते हैं, you would know what you're going to get. He's going to be cheaper, but he's not going to be world class. He is a very, very good player, but he's definitely not world class. Versus a Mudrik, versus a Madueke, versus a Felix, versus an Enzo, who can be world class players. Now, अगर आपने इन प्लेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो ये फीफा तो नहीं है मेरे दोस्त. This is not FIFA where Chelsea fans think that हमने इन प्लेयर्स को ले लिया and it's going to be so easy for us to just integrate them and make them perform. Now I know Southampton के अगेंस्ट एक गोल तो मार सकते थे, एंड चाहे ये लोग नहीं मारे, चाहे आपका स्टर्लिंग मार दे, चाहे कोई और मार दे. बट आई थिंक चेल्सी की स्ट्रैटेजी, बोर्ड की स्ट्रैटेजी ही यही है कि आप इस सीजन में सिर्फ स्टेबलाइजेशन करो एंड एक आइडेंटिटी बनाओ. अब ये क्या चेल्सी फैंस एक्सेप्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता. Because Chelsea fans are used to a club culture which is very anti Graham Potter and very anti futurism. आपने अपने young players के साथ ideally क्या किया है? Except maybe Reece James. You sent them out on loan and जब वो develop हो जाते, you brought them in, right? Tammy Abraham, who was doing so well for Chelsea, was sold because you wanted a Lukaku who was a win now kind of player at that point of time. Now Lukaku is gone, you're struggling. आपने काय हैवर्ट्स, क्रिस्टियन पुलिसिच एंड टीमो वर्नर को लिया था. ऑल थ्री ऑफ देम unfortunately are not performing. So what do? You ship them out, or you don't rely on them too much, or you buy more players to supplement them. I understand the frustration when you don't score against the bottom place team in the league. I understand the frustration when you're not doing as well, and I understand the frustration of spending 600 million pounds and still losing constantly. Let's no, I won't sugarcoat it and I won't lie to you and say that what Potter is doing is acceptable. जो उसका फॉर्म है कितना, 2 wins in 16s, 2 win in 16 games or 3 wins in 16 games, something like that. It's horrible. Relegation form. um in fact मैंने पढ़ा कि साउथहैम्पटन के 1/3 points this season have come against Chelsea. 6 points out of their 18 points have come against Chelsea. It's absolutely insane. And what Potter is doing is not good enough. But you need to understand the players you have. Players को आप जिगसॉ पीसेस की तरह फिट इन नहीं कर सकते कि एंजो आजा. And Enzo will not have to adjust not only to the league, to the players around him, to the Thiago Silvas. He'll have to adjust to the backline. He'll have to adjust to his partner. He'll have to adjust to Mudrik making a run. उसको नहीं पता कि कब कहाँ कैसे रन बनाते हैं. आपने जो प्लेयर साइन किए हैं, चाहे फीलिक्स हो, चाहे मुद्रिक हो, चाहे मैडवेके हो, चाहे एंजो हो, चाहे फफाना हो, चलो फफाना को छोड़ो, ये सारे जो प्लेयर्स हैं, these were the main men in their team. They were expected to do a lot of things by themselves, and now they are expected to work with players not from their country or their culture or even their play style. They're expected to work with players from different countries. एक यूक्रेनियन, एक अर्जेंटीनियन, एक इंग्लिशमैन, एक पोर्चुगीज,
पीछे फफाना फ्रेंचमैन, आपने इतने सारे प्लेयर्स ले लिए हैं, आपने उसको इंटीग्रेट करने का टाइम नहीं दिया। नाउ आई अंडरस्टैंड, कल आज कल बाबा भी बोल रहे थे अपनी लाइव स्ट्रीम पे कि ये तो डिफेंसिबल नहीं है, मैं तो टूट गया हूँ एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड आई एग्री विद हिम। इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी ऑल ऑफ दैट, बट दिस इज when you say trust the process, and I'm saying this as an Arsenal fan, and अब सब बोलेंगे कि Arsenal and Chelsea के goals बहुत अलग हैं, Chelsea has been this, Arsenal has been this, Chelsea is more ambitious and all of that, then you should not have been celebrating these signings. आपको फोफाना की जगह डैन बर्न के लिए मांगना चाहिए था, आपको मुड्रिक की जगह ट्रॉसार्ड के लिए जाना चाहिए था, आपको मैडवेके की जगह कोई और ले जाते। आप एंजो पे आपने 120 मिलियन क्यों खर्चे हैं फिर? Go for somebody who is very well established. Go for a Bruno Guimaraes then. Huh? Go for somebody who's already established and familiar with the league, who is familiar within the club culture in terms of the players and the kind of system that is required. आपने बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है, आपने उनके लिए लिमिटेड ट्रेनिंग हुई, जैन में ही 31 जैन को खत्म, 30 जैन को ट्रांसफर विंडो खत्म हुई है, तब से अभी तक 18 दिन हुए हैं, आपकी लेटेस्ट साइनिंग 18 दिन पहले आई है। हाउ कैन ही जेल वेल with pretty much everybody in this team? He will take time. He will slowly understand them. This is not FIFA. You are not playing generic people with other generic people. You're playing people with personalities and a play style. Some are conservative, some have flair. Some like to shoot first, some like to pass first. तभी क्लॉप की रिक्रूटमेंट की इतनी तारीफ होती है, बिकॉज ही गेट्स द परफेक्ट प्लेयर जो सिस्टम में बिल्कुल सीमलेसली फिट हो जाते हैं। एंड सब लोग कहते हैं लिवरपूल के ट्रांसफर्स में ये क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया। देयर इज अ रीजन ही चोज न्यूनेस, देयर इज अ रीजन ही चोज गैक्पो, देयर इज अ रीजन ही चोज लुइस डियाज। सेम विद अस, जब हमें मुद्रिक नहीं मिला, देयर इज अ रीजन वी वेंट फॉर ट्रॉसार्ड। हमने कैसेडो के लिए ट्राई किया, देयर इज अ रीजन वी वेंट विद जॉर्जिनियो। ठीक है, क्लब कल्चर, क्लब स्टाइल मैटर्स अ लॉट, वेयर ईच प्लेयर हैज दिस प्रोफाइल। चेल्सी में अब मैं कॉल्स देख रहा हूँ पॉटर आउट, एंड आई अंडरस्टैंड चेल्सी फैंस आर फ्रस्ट्रेटेड, एंड लाइक आई सेड, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल दिस रिजल्ट अगेंस्ट साउथहैम्पटन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल दिस रिजल्ट अगेंस्ट साउथहैम्पटन। बट व्हाट इज द सोल्यूशन? गेट अ न्यू मैनेजर, गेट मोरिनियो इन। मैंने एंग्री रैंट मैन की वीडियो देखी, व्हाट, गेट मोरिनियो, एलेग्री एंड सिमियोने इन। Yes, you might win a few games, you might win 10 out of 15 games. The football will be so dire, you will not like it. You will not be able to play. And you think Allegri, Mourinho, and Simeone are happy with the players that you will have? You have players fit for a 3 at the back or a 5 at the back. चलो 4 at the back भी हो जाएगा, मैं कहता हूँ ये players adjust भी कर लेंगे। Some players are very different based on the managers they want, and if टॉड बोली ने ऐसे प्लेयर्स खरीदे विदाउट एनी मैनेजमेंट कंसल्टेशन, तो फिर तो आपको ओनर को क्वेश्चन करना चाहिए। फिर तो आप कोई भी मैनेजर ले आओ, उसका 15-20 गेम के लिए एक बाउंस रहेगा, मे बी एक सीजन के लिए बाउंस रह जाएगा। यू विल वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, और ही विल वांट टू गेट हिज ओन प्लेयर्स। आप 600 मिलियन पे कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हो? आप 200 मिलियन और खर्च कर दो, मैं कहता हूँ समर में, फिर आप उस मैनेजर से भी तंग आ जाएंगे, यू विल वांट टू रिप्लेस हिम। आई अंडरस्टैंड पॉटर is not making a lot of fans right now, but historically, अगर आप logically सोचें, there is evidence of success in every position and every club he's taken. I hear a lot ki he's a mid-table manager and mid-table managers are not good enough for Chelsea Football Club. Fair enough. But then why would the owner of your club, who you've been, by the way, very, very happily supporting about the transfers he's been getting in, why would you support his appointment of Graham Potter? And then why would you support these transfers then if you want to win now? You have bought high potential players, not finished players. अब एंड्रे सैंटोस की भी बात करो, एंड्रे सैंटोस ने एक लेवल पे ही परफॉर्म किया है, विच इज ब्राजील अंडर 20s और वट एवर। प्रीमियर लीग इज सो डिफरेंट। सो either Chelsea fans have to get realistic with their expectations, which is you have a manager who right now is struggling with the host of new players. You have a manager who has a
very good demonstrated record of succeeding at every level of football he has coached. Every level, including the Premier League. If you think that beautiful football is not what you want and it's only the points you want, fair enough. Go for the Zidans, go for the Allegris, go for the Mourinhos, go for the Simeones. You might win. In fact, you might win trophies. But these players are wasted. And you wasted a lot of money. And yes, maybe it's not your money and everything, but this is not how a sustainable club runs. That is something of a preview of what I think about what's happening at Chelsea. I will try to do a longer video, maybe even a stream about Chelsea. I'll try to get Baba or somebody else, even Ankit Bhai, onto this channel. And we'll talk about what's really happening at Chelsea and what's the solution so that I get some clarity. Dekho, I'm not a Chelsea fan, so I can't really relate to it. But I can just tell you from a point of what the process is. Very quickly, let's just talk about Man City dropping points at Nottingham Forest. देखो मैंने गेम नहीं देखा. I was still in the hangover of celebrating Arsenal's win. When Bernardo Silva had scored, मैंने notification पढ़ी. मेरे को लगा ठीक है City 2-3 और मार देगी. But apparently उन्होंने बहुत सारे chances create करे, कुछ convert नहीं करा. And it's kind of strange जब आप City को देखते हो अपनी टीम के against खेलते हुए and then you see them play against Nottingham Forest who've not been in great form. सिटी उनसे पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है. क्रिस वुड coming up with the eventual winner. And Arsenal now playing one game less than City are 2 points ahead of them at the top of the table. जो सारा डिसअपॉइंटमेंट लास्ट वीक तक था, इट्स ऑल ओवर. बट सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त. फेब्रुअरी का मिड हो चुका है, मार्च में तक निकालना है. अगर हम अप्रैल तक इसी पोजीशन पे रहते हैं देन आई वुड कंसिडर अस टाइटल फेवरेट्स अगेन. बट अभी मैं टाइटल के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ. सिटी ड्रॉप पॉइंट्स, Chelsea dropped points, Liverpool and Arsenal won, and a host of other results happened, but I didn't really see them or know anything about them, so I really won't comment on them. But yeah, this was it. This was my preview about Arsenal. Not preview, my review about Arsenal and the other games this week. Thank you so much for watching. If you haven't liked the video, please like the video. If you haven't subscribed, please subscribe. And let me know what you think about the result for Arsenal, for Liverpool, for Chelsea, for City in the comments below. Thank you so much for watching. And as always, come on, you Gunners. Bye.